Tanya. Welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya. So today in this particular session, we will be talking about one of the most important topic from the chapter Body Fluids and Circulation, and that is erythroblastosis fetalis. Yes, this is one of the most important topic that is really important as far as your NEET examination is concerned. Many MCQs, many PYQs question have come up from this particular topic. So let's get started. So today we are going to study this topic in the most summarized way. If you have to understand erythroblastosis fetalis, you have to understand that this is a case of RH incompatibility. Okay, RH is basically an antigen, right? If the antigen is present in your body, we call it RH positive. If the antigen is not present in your body, we call it RH negative, right? So we have to consider this case over here to understand what exactly is erythroblastosis fetalis. So as I told you, this is a case of RH incompatibility over here between a couple, right? So for this case, we have to consider that the male partner is RH positive and the female partner over here is RH negative, right? So when they produce a baby, so for example, the first child of this particular couple turns out to be RH positive, right? As you already know, the mother over here is RH negative and the first child that this couple has produced is RH positive, right? So what you have to understand is that whenever the pregnancy is happening, till the time of delivery of the baby, till the time of birth happening, the blood is not exchanged. The blood of the mother and the blood of the fetus is not being exchanged because there is a barrier. The barrier is called the placenta, right? So placenta is basically preventing mixing of mother's blood and the fetus blood over here, right? But during the time of delivery, the blood is getting exchanged, the blood is getting mixed. तो जब डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पे जब ब्लड कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो RH पॉजिटिव एंटीजन है, दिस इज एंटरिंग इन द मदर्स ब्लड, राइट? और यूजुअली क्या रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, जैसे ही कोई नया एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेती है, राइट? सो एज सून एज द फर्स्ट चाइल्ड इज बोर्न, व्हेन this child is born, birth of the baby happens. After this condition, इस RH पॉजिटिव एंटीजन ने मदर की बॉडी में एंटर कर लिया. जैसे ही मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव एंटीजन एंटर हुआ, सो मदर की बॉडी ने RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर दी. सो नाउ एंटीबॉडीज आर देयर antibodies are present against RH antigen in mother's body. ठीक है? करेक्ट? ये आपको एक वन केस इज क्लियर नाउ. अब एंटीबॉडीज का सिनेरियो ये होता है कि ऐसा तो है नहीं कि अगर एक बार एंटीबॉडीज डेवलप हो गई तो दूसरी बार हमें वापस डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं. ठीक है? The body has a memory, the antibodies has a memory. So the antibodies, अगर एक बार आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो वो एंटीबॉडीज हमेशा रहेगी आपकी बॉडी में, राइट? नाउ लेट्स कंसिडर द सेकेंड प्रेगनेंसी. नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ द लेडी हैज कंसीव्ड अगेन, ओके, एंड द सेकेंड चाइल्ड ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी RH पॉजिटिव. अब जो सेकेंड बेबी है वो भी RH पॉजिटिव है, ठीक है? सो फर्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी के वक्त प्रॉब्लम होने के हाई चांसेस है. क्यों? क्योंकि अब मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है किसके अगेंस्ट? RH एंटीजन के अगेंस्ट, राइट? सो नाउ व्हेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, अब अगर मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हुआ तो जो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है दैट विल गो इन द फीटस ब्लड ऑल्सो. फीटस के ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट है, वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन को किल कर देंगी एंड देयर आर हाई चांसेस दैट द बेबी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट यानी कि इरिथ्रोसाइट्स का ब्लास्ट हो रहा है. यहाँ पे आरबीसीज का, यहाँ पे आरबीसीज मर जाएंगी जिस वजह से जो फीटस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस,
राइट. सो सेकेंड चाइल्ड के वक्त क्या होगा? RH antigen will be destroyed by antibodies present in mother's blood. Right? And इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? Erythroblastosis fetalis. Now quickly we'll go over thing. A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. ये कब हो सकता है? When the father is RH positive और mother is RH negative. ठीक है? तो fetus क्या हो गया? RH positive हो गया. अब RH antigens of the fetus, they do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the barrier which is known as your placenta. ठीक है? Placenta is the barrier जो कि blood mixing को नहीं होने देता. अब, however, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of the RH positive blood from the fetus. डिलीवरी के वक्त क्या हुआ? जो RH positive blood है fetus का, वो मदर की बॉडी में ट्रांसफर होगा, एक्सचेंज होगा थोड़ा. उन केसेस में क्या होता है? The mother starts preparing antibodies against the RH antigen in her blood. और antibodies, as I told you, they stay for lifelong. ऐसा नहीं है कि एक महीने में खत्म हो जाएंगे antibodies, right? So, in case of her subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother can leak into the blood of the fetus, जो कि RH positive होगा, and it can destroy the fetal RBCs. तो जो second pregnancy होगी, अगर वो भी RH positive हुआ, the fetus, so there are high chances कि वो antibodies fetus की RBC को destroy कर देगी, antigen को destroy कर देगी, and the fetus will not be able to survive. This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. और इसी condition को हम क्या कहते हैं? Erythroblastosis fetalis. Correct? But आप इसको prevent कैसे कर सकते हो? So this can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. जैसे ही first child का delivery हुआ, so anti-RH एंटीबॉडीज वाले इंजेक्शंस आप मदर को दे दीजिए, जिस वजह से जो RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हुई है मदर की बॉडी में, दोज विल बी डिस्ट्रॉयड, और ताकि सेकेंड प्रेगनेंसी के वक्त भी दिस कंडीशन विल नॉट बी फेटल टू द fetus, right? So injection of anti-D, it can prevent the B cell activation and memory cell formation in the mother, right? So that was it for today's session, and that was the most summarized way of the topic erythroblastosis fetalis. Now there is one more very interesting information that I would like to share, which is that Infinity Learn brings you All India Test Series pack, which includes 27 All India tests, 20 full syllabus mock tests, 25 topic-wise PYQs, 3 PCB books with video solutions on the app, performance reports so that you can analyze your performance, and you can work in a better way to improve your marks. And all of this you can get in just rupees 2,999 if you apply the coupon code YouTube50 off. You will get the link in the description below. I think it's a very, very good deal, very affordable, and very helpful for all the students who are preparing for NEET examination, right? Also, India's largest scholarship exam is coming up, which is Score Online for grades 3rd to the 12th, right? And if you score good marks in this scholarship examination, you will get educational allowance, study setup along with the laptop, up to 100% scholarship. So do not miss this amazing chance. Again, the link is in the description. You just have to click on the link and everything will be done. So that was it for today's session. If you found this particular session helpful, do not forget to hit the like button. Also subscribe to the channel, press the bell icon so that no more notifications are missed from your end. Thank you.